Hi guys, welcome back to my channel. If you don't know me, I am Vritti Thakkar and I post videos on fashion, beauty and lifestyle. And I am back with another haul. Today I'm gonna be showing you all the products that I got from Nykaa, and it's gonna be quite a huge haul, and I'm really excited to show you all the products. I've tried them out. Some I have tried them out and some I am yet to try, and I'm gonna give you a review and update as to whether I like them or not. So without further ado, let's just get started with today's video. First up is this beautiful brush set that I got. I was on a lookout for brush sets which are affordable as well. I was just scrolling through Nykaa and I found this, and this is from a company called as BP Bronson Official. And मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है ब्रशेस के बारे में. बहुत ही अलग अलग टाइप के ब्रशेस है फॉर all different kinds of purposes, and I use this particular brush to conceal my under eyes and they are really good. इसके ब्रिसल्स भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है विच इज़ अनदर गुड थिंग. एंड इट क्लेम्स कि ये प्रोफेशनल ब्रशेज़ और ये बेस्ट सेलर्स में भी मुझे दिख रहा था. एंड द बेस्ट पार्ट इट कि ये कुछ 350 या 400 के बीच में ही है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. बट मैं सारे ब्रशेज ट्राई आउट करने के बाद आपको एक फ़ाइनल रिव्यू दूंगी. बट फॉर नाउ आई सीम टू रियली लाइक इट. Next up is this lip gloss from Dot & Key, and I'm really hooked on this product. This is their Gloss Boss Lip Balm with SPF 30 and vitamin C and E, and it's in the variant Mango Passion. And the best part about this is that it is not sticky whatsoever. Like, I don't know if the camera is catching, but it has such a beautiful shine to it. I am really in love. And just by the way, I have applied this right now as well. I'm wearing this variant. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये वेरिएंट, एंड आई थिंक इट रिटेल्स फॉर अराउंड 250 to 300 if I'm not wrong, but I'm just gonna put the correct prices. And it has a really like mango and fruity scent to it as well. I really love the packaging also, and ये बहुत ही ज़्यादा दूसरे variants में आता है. I really can't find other two variants that I'm liking right now. एक है कोको मिंट और एक है कैरेमल समथिंग समथिंग. सो लाइक दीज थ्री वेरिएंट्स आई एम गोना लिंक डाउन बिलो. दीज आर माई लाइक एब्सोल्यूट फेवरेट. और वो जो कोको कैरेमल है और कोको मिंट है, वो दोनों तो एकदम ही लाइक फॉल एंड विंटर वाला lip gloss shade hai. So like it would be really appropriate for the winters, and this is like my all time favorite. Third up is this cute blush from Swiss Beauty, and it is the Cheek It blush in the range shade 5 Chic Me Up. ये एकदम ही coral shade है which I really like. I always try to stick to coral shades for my blushes basically. And ये ना कुछ नया variant आया है Swiss Beauty का. I looked it up on another websites, like I looked it up on another shopping platforms basically, but I couldn't find it anywhere. ये सिर्फ Nykaa पे available है apparently. Correct me if I'm wrong. So it is in this beautiful shade, and ये कुछ like it has really good quantity. I think it's gonna last me for 6 months at least. And see, the shade is so pretty guys, and it's like highly pigmented as well. Like it gives such a natural flush to your cheeks. So I really like to apply it to my cheeks and nose, and थोड़ा सा मैं ऐसा lips पे भी apply कर देती हूँ. Best part about this is that it retails for around 350 rupees. So really like it. I think I'm gonna give it a solid 8 out of 10. Next up is another product from Swiss Beauty. This is the Gloss Me Lip Gloss. ये ना एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड के वेडिंग में गई थी, तो मेरी फ्रेंड लेके आई थी, तो आई जस्ट ट्राइड इट आउट एंड आई फेल इंस्टेंटली इन लव विद दिस प्रोडक्ट. एंड मुझे कुछ ये सेल में 120 रुपीज़ में पड़ा, बट आई थिंक इट रिटेल्स फॉर अराउंड 250 रुपीज़. आई एम गोना पुट द रिटेल प्राइस ओवर योर. And again, it is like the Sheen lip gloss, and the quantity is also like really good for 250 rupees. I'm just gonna apply it to show you guys. Can you see the difference? The lips instantly look so much plumpier, and I think it lasts for around 1.5 2 hours, and after that you're gonna need to reapply it. But मुझे बहुत अच्छा लगा because non sticky है. I really like my lip oils and lip glosses to be non sticky, and the packaging is also like really good. मुझे ना Swiss Beauty के products इतने affordable होने के बाद भी इतनी अच्छी packaging होती है.
So all in all, a big thumbs up from my side, and I'm obsessed with this product. मैं like every day I use this only. Next up in makeup, we have this two kajals from Plum. So I was on a lookout for kajal. Actually तो मुझे ये PR में मिला है, but कल मैंने swatch किया और ये इतना beautiful है, so I thought that I'll add it in this video. Can you see how pigmented and beautiful it is? बहुत ही ज़्यादा, एक स्ट्रोक में ही लाइक इतना अच्छा पिगमेंटेशन है. एंड मैंने ये कल ब्लैक काजल एज अ लाइनर अप्लाई किया था, एज अ विंग लाइनर, एंड आई रियली गॉट 2 to 3 compliments from my friends. The next up is this beautiful green color, like in a sort of an emerald green color almost. And this is also like really beautiful. मुझे मेरे water line पे लगाना बहुत पसंद है ये color. And I think it retails, I don't know, I can't find the price, but I'm gonna surely put the price here. But the product is a 10 out of 10. Might I say these are the best kajals I've come across till now, and they are like very heavy duty also. ये जल्दी निकलता नहीं है. So as you can see, इतना जल्दी नहीं निकल रहा है ये, एंड बट मेकअप रिमूवर से निकल जाएगा. सो नेक्स्ट अप इज दिस माइसेला वाटर फ्रॉम बायोडर्मा, एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट सिंस 4 years नाउ, एंड इट इज़ द बेस्ट मेकअप रिमूवर आई हैव कम अक्रॉस. इट रिटेल्स फॉर अराउंड 990 rupees, बट आई थिंक इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट. it's a little expensive, it is for 990 rupees, but this is the best product. एक ही स्ट्रोक में पूरा मेकअप निकाल देता है. ये जो मैंने काजल भी बताई थी, लिटरली वो एक स्ट्रोक में निकाल दे रहा था. एंड मैंने फिर दूसरा मेकअप रिमूवर लगाया तो मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था बेसिकली. सो आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली अ लिटल एक्सपेंसिव, बट इट इज़ डेफिनेटली वर्थ द प्राइस. मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, एंड आई कीप like coming back to this particular product, and it is my favorite makeup remover, no doubts about it. And like my skin is a little sensitive also, तो मुझे कुछ burning sensation कुछ नहीं होता after using this product. Next up is a skincare product. Now I don't know, for some reason I've been breaking out quite a bit, and मेरे साथ कभी हुआ नहीं है ऐसा. So I like, this is what my sister got recently for herself, but I've been applying since 2-3 days, and I can quite see a difference in my skin. Like my skin is bare right now also. मैंने सिर्फ lip gloss लगाया, and you can see यहाँ पे थोड़ा सा bumpy skin था, but it is settling धीरे धीरे, and ये पूरा corner red हो गया था. अभी भी थोड़ा सा red है, but ये बहुत red हो गया था और बहुत dry हो गया था. तो मैंने सिर्फ ये अफेक्टेड एरियाज़ में लगाया, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले. आई एम गोना रीस्टॉक इट अगेन. इट इज़ द मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम विथ मलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी. सो आई थिंक इट इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट. ये इसका प्राइस तो कुछ 471 है, बट इस पे हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो चल ही रहा होता है, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर का कोड भी यूज़ कर लोगे तो मामाअर्थ की साइट पे भी 20% ऑफ मिल जाएगा आपको. सो आई थिंक इट इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट. यू मस्ट हैव इफ़ यू हैव एक्टिव एक्ने ऑन योर स्किन. Next up is this chotu sa bottle, and it's a hair serum from Tresemme. This is the keratin smooth with argan oil, and it's a anti-frizz hair serum. एंड ये 25 ml का बॉटल कुछ 99 रुपीज़ में था, तो मैंने सोचा पहले एक छोटा सा बॉटल मंगा लेती हूँ टू ट्राई इट आउट. आई हैव द अदर Tresemme वन प्रोडक्ट. आई एम गोना मेक श्योर टू पुट अ पिक्चर हियर और हियर समवेयर. सो आई एम यूजिंग इट, तो मैंने सोचा कि ये दूसरा वाला भी मंगा के देखती हूँ कि कैसा है. सो लाइक स्टे ट्यून्ड फॉर द रिजल्ट्स ऑफ दिस. नेक्स्ट अप इन मेकअप वी हैव द कलर बार इनटू जैकलीन eyeliner, and it claims that it is a 14-hour stay eyeliner, and I really like the packaging of this, so I thought I should give it a try. And I was on a lookout for a good eyeliner, so I thought let's not try out with color bar only. And इसका packaging बहुत ही ज़्यादा cool है guys, एकदम pen जैसा है. So this is like a sketch pen liner. I'm just gonna swatch it and show you guys. So this is what it looks like. The brush is also like really, like it bends really nicely, so I think the application should be really smooth. And yeah, see, it does not come off at all. Yeah, it's a really good product. I'm really excited to have this. इसका कुछ retail price है 795, and it is made in Germany.
So yeah, I'm really liking it, but I'm gonna still give you an update as to how I like the product. Next up, we have a sheet mask. It's the matcha tea and chamomile sheet mask, and it says that it's made in Korea. And as we know that Korean skincare is the best skincare in the world, and it retails for around 100 rupees. And it says that the net quantity is 20 ml. So I'm really excited to try this out. As you know, my I have really dry skin, so like sheet masks work really good for me, so I just make sure to stock up on these, and it was just for 100 rupees, so I thought I should give it a try. And I've never used the variant matcha tea, so I was really excited to do this. Next up, we have a lipstick by Plum, and it's a matte lipstick. So I have got quite a hold on lip glosses and lip oil, so I thought I should try a different variant and try out a matte lipstick. It's in the shade Titanic. शेड तो बहुत ही ज़्यादा कूल साउंड कर रहा है. लेट्स जस्ट स्वॉच एंड सी हाउ द शेड इज़. So I really like nude shades, so I tried to have this like brown and nude kind of a shade for winters, because ये विंटर के लिए एकदम ही अप्रोप्रिएट कलर लग रहा है. And I'll just watch it. Oh my god, this is like so soft. बहुत ही ज़्यादा ही like it's gonna look very soft on the lips, and it's in this like warm brown tone. I really love it. I'm impressed, but I'm still gonna use it a couple of times and give you an update in my monthly favorites or something. Last up, we have scents. So in scents, I'm gonna be showing you two scents since I'm obsessed with perfumes and mists. So this is the Bath and Body Works Champagne Toast, and it is such a good scent. Like इसका है ना sweet and burnt scent के बीच का कुछ है. And oh my god, it is so nice. It is so different from the ones that I use it. मुझे usually vanilla, coconutty, tropical kind of scents पसंद है, but this is a little different. And ये छोटू सा bottle retails for around 799 rupees. So if you don't want to go with a bigger bottle and you want to try out the scent yet, so you can try a smaller bottle. And this is definitely something that I'm gonna be recommending. The only bummer that I don't like about Bath and Body Works products is that they are not long lasting at all. ज़्यादा से ज़्यादा ये 1.5-2 घंटा ही टिकता है, उसके बाद you have to reapply them. So that is something that I wish they could work on. But other than that, I really love it, and I definitely recommend. Next up is these star products of the video. These are my like recent purchases, and they are from a brand called Sol de Janeiro. ये बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है among all the influencers, so I like had it in my wish list to try it out since a very long time. ये है थोड़े से महंगे, but I think they are really worth it. So मैंने ऑर्डर किया था ये दोनों का पैक, the Sol de Janeiro's infamous Brazilian Boom Boom Cream and the Sol de Janeiro's Pistachio and Salted Caramel Perfume Mist. And the perfume mist is something that I am definitely in love with. ये 90 ml का बॉटल रिटेल फॉर अराउंड 2000 रुपीज़, एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटू सा प्रोडक्ट है. बट आई थॉट कि मैं जहाँ पे भी परफ्यूम अप्लाई करूँगी वहाँ पे मैं पहले मॉइस्चराइज़र इनका जो क्रीम है वो लगाऊंगी, देन आई एम गोना स्प्रिट्स द परफ्यूम ओवर देयर सो दैट इट कैन बी लॉन्ग लास्टिंग. सो आई थिंक दिस रिटेल्स फॉर अराउंड 990 रुपीज़. बहुत ही ज़्यादा छोटू सा है, बट द माई पर्पज़ इज़ ऑल्सो लाइक वेरी लिमिटेड फॉर दिस प्रोडक्ट. So I thought that I should give a chotu bottle a try. I'm gonna spritz because I can't control myself. Oh my god, as I just said that I love tropical coconutty vanilla vibe, so it is like a very tropical scent. बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, and this is like my recent favorite purchase. मेरा ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है. लाइक एक बार स्प्रिट्स किया तो पूरे दिन ये स्मेल रहने ही वाला है आप पे. दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन डेफिनेटली प्रॉमिस. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये दोनों
जो 2890 के प्रोडक्ट्स है उसके साथ एक फ्री मिस्ट भी आया. दिस इज़ रियो रेडियंस. ये थोड़ा सा फ्लोरल सेंट है. इट्स रियली गुड बट आई वुडेंट बाई दिस, बट ये अगर फ्री में आ गया तो आई एम गोना डेफिनेटली यूज़ इट. So yeah guys, that makes us the end of the video, and if you've watched until now, thank you so much for watching, and make sure to like, share and subscribe to my channel. I'll see you super soon. Bye.